ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान हु सिग्निफिकेंट फॉर अ कपल ऑफ रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जनरली हमेशा IT इंडस्ट्री में आई बीन वेरी इंटरेस्टेड एंड पाकिस्तान का मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फ्यूचर जो है वो IT सर्विसेज, IT प्रोडक्ट्स के अंदर है। सो उसमें तो मैं कॉन्वर्सेशन वो करता ही हूँ जब भी मुझे कोई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन मिलती है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, दिस इज़ प्रॉब्ली द ओनली woman CEO in the tech industry that I know of. I'm sure she may know of some others as well, but she's the only one as far as I could tell. And so I thought कि ये मैंने conversation करनी ही करनी है। पाकिस्तान में IT services sector वैसे भी बड़ा एक closed off है, एक sort of boys club है, उसके अंदर आपको if you want to break into that it's fairly difficult, but उसमें जाहिर है कि as a woman तो 10x और ज़्यादा मसला होता है। पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में तो और भी ज़्यादा है। So with us we have today Mahe Zehra Husain, who's the CEO of FiveRivers Technologies. Apart from that as well, she's done a bunch of other things. They have a startup of sorts called Smart Windows. She was co-founder of Cheezein, etc. She runs Ink Tribe and a bunch of other things as well. Zehra, thank you so much for being part of the show. Thank you so much for having me here. I'm really looking forward to this conversation. मैं थोड़ा सा just start करूँगा, अगर आप मुझे बता सकें FiveRivers Technologies के बारे में। What's the scale? कितने अरसे से आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं? What is the area that you sort of work in? IT services तो है, but it's a wide range, right? So किस लेवल पे आप ऑपरेट करते हैं, किस क्वालिटी ऑफ टैलेंट का काम करते हैं? Give me a summary of it. Okay, so FiveRivers Technologies जो है वो लाहौर में बेस्ड है। 2003 से कंपनी शुरू हुई और अब माशाल्लाह 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। आई जॉइंड इन अराउंड 2010 आफ्टर माई मास्टर्स। हम हर किस्म का सर्विसेज का काम करते आए ओवर द ईयर्स। योर यूजुअल वर्डप्रेस, जब मोबाइल ऐप्स बहुत ज़्यादा हुई थी तो ऑल द मोबाइल फ़ोन प्लेटफॉर्म्स। बट जो 2-3 चीज़ें दैट आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एक हम लोगों ने ई-लर्निंग का काम कुछ किया था, which was very very interesting, and I feel like उधर बहुत ज़्यादा potential है अभी। E-learning, what do you mean by that? So e-learning में we were creating content for a US based company. उनका e-learning platform था for children, so they were following the American curriculum, maths, science वगैरह के gizmos, gadgets, छोटी games, things that explain concepts. Right. So मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एक interesting चीज़ है। और अब हम लोग ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं in addition to everything else is on AI, machine learning and data science. मेरी अपनी education सारी mathematics में है, so again that's something that's really close to my heart, and I'm sure anyone who knows anything about anything tech knows कि it is the age of AI. 100%. So उसमें ये है कि हमारा काम interesting भी बहुत ज़्यादा होता है, because that's again something that we're very passionate about. We want to do things that we are interested in. And our people are interested in. So we try and look for the right fit for the right person, instead of saying कि यार ये काम आया तुम भी कर लो, नहीं तुम कर लो। We try and look for stuff that we are actually passionate about, because उससे I feel like आपकी ना एक work quality और आपकी जो एक environment होती है ना वो बड़ी dynamic और मज़े की बन जाती है। So 20 साल हो गए कंपनी को, मुझे कंपनी के साथ almost 13 साल हो गए। So tell me about the talent. You mentioned कि we look for a certain type of talent. ज़्यादातर आपके जो हायरीज होते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं? What's the persona of essentially a fresh graduate that you're looking for generally? Problem solver, someone who doesn't say no. मैं कुछ जो इंटरव्यूज़ करती हूँ उसमें आई ट्राई एंड फिगर आउट कि अगर इस इंसान को आप कोई प्रॉब्लम देंगे, or if you give him a challenge, what will his attitude be? Because you see, you can never really make sure that you know someone who knows everything. ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है, right? But एक जो आपका attitude होता है ना, you have to be willing to learn. आजकल तो हर रोज़ you have to be willing to learn. रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं, जो हमने स्कूल में सीखा था वो पुराना हो गया है, शायद हम अप्लाई भी नहीं करते। एक वो जो है ना हमारी willingness कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, that is what I feel makes a person. Because एक आपकी willingness हो, अब access to knowledge is very very easy. मतलब आप YouTube खोल लें, आप Coursera खोल लें, आप Udemy खोल लें, there's nothing that you cannot learn. तो एक वो जो अंदर की आग होती है ना कि यार मैं I can do this, I will do this. That is what I look for most of all. Interesting. You talked about early on as well e-education, and इसमें भी you're talking about problem solving.
पर्सनली मुझे लगता है जो हमारा जो एजुकेशन का मॉडल है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग रियली इज़ थर्ड फोर्थ स्टेप पे आती है. अच्छी यूनिवर्सिटी सिखा देती हैं, लम्स, फास्ट, नस्ट, GIK में भी, बट इनका एग्रीगेट टोटल जो स्टूडेंट है वो प्रॉब्ली 3% भी इंडस्ट्री डिमांड को पूरा नहीं कर रहा. अच्छा, हम बात करते हैं $10 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स की. आप उसको जब डिवाइड करते हैं तो आपको कोई तकरीबन मिलियन प्लस इंजीनियर चाहिए. आपकी टोटल जो साल की पैदावार है वो 25,000 है, उसमें से तो मेरा ख्याल है 5,000 भी मुश्किल एम्प्लॉयबल है. हम we're just going ahead every year. हम बार बार ये नारे मार रहे हैं कि बड़ा टैलेंट है जी, हम बड़ा यूँ कर लेंगे, हम बना देंगे, मैं बना दूंगा, वो बना देगा. आपने ऑफ कैमरा मेंशन भी किया कि you guys are interested in a campus as well. Yes. And that's we'll talk about that in detail as well. But how do you solve that problem of talent in the new age of AI? पहले तो चलो यार, आपने रटा लगा के आपने बच्चे को कुछ तो कर दिया था, तो इतना वो हो गया था कि ठीक है यार, इसको पाइथन आती है, इसको कुछ ना कुछ आता है बेसिक, राइट, एंड लो वैल्यू में मैं इसको डाल के तो एक मशीन की तरह चलाता रहूँगा. Personally, though, I think that the future is just in problem solving. It's not in a skill, it is just in problem solving. The tools are subject to change and could change every 3 months for that matter. And that is something that mere scope mein we're not teaching the kids at all. So how do you see the education system right now? अगर मैं focused on IT की बात करूँ, मैं अभी प्राइमरी की बात नहीं करता, मैं ये नहीं कहता बच्चे जो हैं जी वो उनकी बेस ही ख़राब है तो वो आगे जाके क्या करेंगे. मैं कह रहा हूँ कि 4 साल आप बच्चे को यूनिवर्सिटी में डंप कर रहे हैं और उससे जब वो निकल रहा है तो ही इज़ नॉट रेडी टू परफॉर्म, एंड रादर उससे वो इतना सख्त होकर निकलता है कि उसके लिए अब वो जो एबिलिटी टू सेल्फ लर्न है वो भी ख़त्म हो जाती है. हाउ डू यू सी द एजुकेशन एस्पेक्ट, द कंपोनेंट, द सप्लाई साइड ऑफ द इंडस्ट्री? So what I'm going to do is that I'm going to talk about what you said you don't want to talk about, right. The primary and secondary. Right. We're 4 siblings, and all 4 of us were homeschooled for a part of our lives. Right. मैंने स्कूल क्लास 6 में छोड़ दिया था. I was 10 years old, and the next time that I gave any exam was my O levels. My parents asked me to choose my subjects for my O levels, and I was allowed to choose my subjects, go get my books, everything else was up to me. मैंने अपना टाइम टेबल फिगर आउट किया. मैंने फिगर आउट किया कि अच्छा भी अगर मैंने O levels जल्दी देना है, which I think I gave at the age of 14, तो मैंने कितनी स्पीड से क्या चीज़ पढ़नी है. मैथ्स पढ़नी है तो किस तरह पढ़नी है, साइंस पढ़नी है तो किस तरह पढ़नी है. द स्किल्स दैट आई लर्नड देन, द कॉन्फिडेंस ऑफ आई कैन डू इट, मतलब आज फ्रैंकली मैं अपने माँ बाप को सल्यूट करती हूँ. अगर मुझे आज कोई 10 साल का बच्चा कहना कि मैं घर पे पढ़ लूँगी, आई डोंट नो इफ़ आई वुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन दैट किड. बट वो जो एक बेस बनी है मेरी, my parents were there, मतलब I knew that if I really needed help with something they would help. But ये नहीं था कि पहली चीज़ जो आपको मुश्किल लगी, instead of trying to work it out yourself, you just run for help. There was no spoon feeding. There was none of that. And I can't tell you how much that has helped me throughout my life, because एक आपको अपनी ability में confidence आ जाता है कि यार ठीक है ये मुश्किल है, but अगर मैं लगी रहूँगी तो मैं कर लूँगी. And I've done so many things in my life, from writing books to now going into real estate. और लोग मुझे पूछते हैं किसी से आपकी एजुकेशन, I'm a mathematician. You just need to know how to problem solve. You just need to know how to learn yourself. ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का मसला है कि kids don't feel passionately about problem solving and they don't learn themselves. एक ये मसला भी है, और एक आई थिंक ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको एज अ सप्लीमेंटल चीज़ लोगों को सिखा भी सकते हैं, बिकॉज एक एटीट्यूड चेंज है, राइट. एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है और एक एटीट्यूड चेंज है. माशाल्लाह IQs तो हमारे होते हैं, मसला ये हम वो इस्तेमाल नहीं करते इन द राइट थिंग्स. रट्टे तो हम ज़बरदस्त किस्म के मार लेते हैं. अब रट्टे मारने में भी यू नीड इंटेलिजेंस, इट्स नॉट ईजी. मुझे नहीं लोगों के नाम याद रहते. सो टेक दैट इंटेलिजेंस एंड देन अप्लाई इट टू द राइट थिंग्स. सो आई फील लाइक अगर जो आपका 4 साल का है और बच्चे में पोटेंशियल है, एजुकेशन पूरी फॉर्मल कंप्लीटेड है, तो 3 से 6 महीने की इस तरह की हम अगर ट्रेनिंग्स डिवाइस कर लें जिसमें यू जस्ट लिटरली पुट देम इन एन एनवायरनमेंट वेयर दे हैव टू प्रॉब्लम सॉल्व. Right? They are on their own, they just have to do it. I think they will also find things within themselves that they didn't know existed.
सो बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, बट आई फील लाइक होपलेस सिचुएशन भी नहीं है. Right. इट कैन बी सॉल्व्ड. In terms of brick and mortar, do you think university can so थोड़ा सा मैं conversation को switch करता हूँ, पाकिस्तान को हटाता हूँ. Do you think the 4-year university education model works in the age of AI? Or do you think education as we know it may just get disrupted over the next few years? I think education as we know it will get disrupted and should get disrupted. Because I think that 4 years where you are just learning something according to a curriculum that has been developed, and you are supposed to fit into this curriculum that has been developed for thousands of other kids. Yeah. No. Because every person is passionate about different things. I might want to dive deeper into mathematics or data science. I might want to change things, tailor things according to what I want. Maybe I want to create a product, so I want to learn with my mathematics, I want to learn product design and development and marketing. I mean, there are so many things that I have to learn every day now because I was like, yaar, ye combination available hi nahi tha. I mean, maybe you're a data scientist who want to solve the real estate problem, right? Yes. So maybe you need a course on real estate, which has Yeah. nothing to do with anything, but it just sort of helps Real you. estate, water quality. So जो मैंने अपना मास्टर्स किया था, I took a few water quality courses because at that time मुझे था कि पाकिस्तान में water resources का बहुत मसला है. So that plugs in really well with data science. But ये जो combinations है ना, again ये problem solving combinations है ना, कि भाई अच्छा आपने क्यों maths सीखी है या आपने data science क्यों सीखी है, आपने computer science की क्यों है? People will not have an answer to that problem. Right. क्योंकि आपने जो भी आप चीज़ करते हो, यू आर पैशनेट अबाउट इट इफ़ यू हैव एन एंड गोल इन साइड कि भाई मैंने ये मसला हल करना है. और किसी भी मसले को हल करने के लिए यू नीड अ वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड यू नीड टू ब्रेक आउट ऑफ द ट्रेडिशनल करिकुलम एंड द ट्रेडिशनल सिलेबस. एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव बिकॉज आप बेसिकली यू कैन पुट एनी थिंग टुगेदर. आप मार्केटिंग के साथ डेटा साइंस पढ़ें, आप उसके साथ वाटर मैनेजमेंट पढ़ें, आप उसके साथ कोई चौथी चीज़ पढ़ें और you come up with a solution to a problem. because इस वक्त I feel पूरी दुनिया को ना solutions की ज़रूरत है क्योंकि problems बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, चाहे वो environmental concerns हों, चाहे वो manufacturing में efficiencies आप लाना चाह रहे हों, कुछ भी हो उसमें अब आपको problem solving की ज़रूरत है. Let's talk about AI for a bit. बहुत कंफ्यूजिंग सा टाइम है एंड AI को मैं 2 एरियाज में देखता हूँ. ज़ाहिर है एक टेकी साइड ऑफ AI है, राइट? सो इट्स एक व्हेन यू थिंक AI, द टेक्नोलॉजिस्ट विल थिंक basically the models, will think about the data, the segmentation. I want you to plug yourself out as a technologist and as a consumer look at AI. उसके ऊपर बड़े concerns हैं. Some people are just like, this is going to lead to human extinction. I don't agree with that. I think it's just a tool, just like any other tool. And early on, because the pace of innovation, it's scaring a lot of people. But then एक side वो कहती है, दूसरी side जो है वो कहती है कि AI is going to solve all of our problems and it's going to radically increase the pace at which we're going to solve those problems year on year. अच्छा, that part, while sounds very fun and optimistic, also scares me a bit, because not that it has anything negative attached to it, but on a social front, as a society, we tend to take innovation, then we evolve ourselves, we get used to it. With AI, it seems like मेरा अपना content की space में हूँ, and it's interesting, people used to say कि AI सब तब disrupt कर देगी, creativity नहीं जाएगी, and this is the first space that they started disrupting. But I see that every day. I'm like, अच्छा ये एक नया tool है. This seems like I need to build a grasp on it. And then 2 weeks later, there's another updated version. I'm just like, यार अच्छा मैं वो करूँ या मैं ये करूँ या मैं ना ही करूँ. I'll just let it evolve on its own. So as a starter, if I were to ask you, how do you see the age of AI and what's going on and how that may affect much of our societies?
अगर आप अपनी पैसिव इनकम के बारे में परेशान है, खासकर आजकल की इकोनॉमी में जहां पर ऑलरेडी कैश कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है और इन्फ्लेशन हमें मार रही है, तो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद सरमाया फाइनेंशियल्स. दे आर ऑफरिंग 2 वेरी कूल ट्रेनिंग्स. कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स, जिसमें आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर एक कंपनी के अंदर क्या ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है टू फिगर आउट कि वो एक अच्छी कंपनी है टू इन्वेस्ट इन. और दूसरी ट्रेनिंग है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंट ट्रेडेबल एसेट्स लाइक कमोडिटीज, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं. पर्सनली ये ट्रेनिंग मैंने भी ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल. द लिंक टू द ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. चेक देम आउट एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी. एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. I think it will take care of mediocrity because आपकी मेरी अभी भी पहले बात हुई थी कि काफ़ी जो हमारी एटलीस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज में काम होता है ना, हमें होता है कि हम कोई बंदा बिठा दें और वो मशीन की तरह काम करता है. अब वो नहीं हो सकता. So people will have to upskill themselves. People will have to redefine themselves. People will have to do something that they are passionate about. क्योंकि अब उसके बगैर ना दाल नहीं गलेगी. और मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप एक इंसान को पुश कर रहे हैं कि वो अपने आप को बेहतर करे, क्योंकि जो टास्क मशीन कर सकती है वो मशीन कर रही है. आप नहीं मशीन बन रहे हैं, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है. यू हैव टू बी क्रिएटिव, राइट? सो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है. एथिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बीच में, स्पेशली सिंस आई एम वेरी पैशनेट अबाउट आर्ट. तो अब जो कुछ डाली और मिड जर्नी की तरह टूल्स हैं, उसमें एआई और एथिक्स का बहुत मसला एक है जो कि आ रहा है. एंड वो एक चीज़ सही भी है कि व्हाट डेटा इज़ द टूल ट्रेन्ड ऑन, और जो डेटा वो तो इंसानों ने बनाया ना, वो बायस का जो एलिमेंट आ रहा है आजकल और वो सारा कुछ वो. एंड ऑल्सो पीपल आर सेइंग कि भाई हमारे से इजाज़त तो किसी ने नहीं ली. यू आर फीडिंग आवर वर्क इनटू अ मॉडल and the model is learning from that, but nobody asked us, right? So this is not all public domain work. This is new work that things are being the models are being trained on. मुझे लगता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, उसको इंसान को इस्तेमाल करना सीखना भी होता है. उसकी फिर ऑब्वियसली ये एथिक्स की, राइट एंड रॉन्ग की बात होती है. और फिर सर्टन आप गाइडलाइंस इन प्लेस डालते हो. मुझे लगता है कि ऑब्वियसली with AI also we will have to establish, because you can use technology for good and bad. Regulation तो आएगी. But I feel like AI, I mean personally in my everyday life I don't sit and code every day, but it's just been another person to bounce ideas off of. Right. I mean that's what I use ChatGPT for a lot. Just idea generation. Someone to talk to. And उसके बाद आपकी human creativity आती है, और वो आनी ज़रूरी है. बट अ लॉट ऑफ द मीनियल स्मॉल स्टफ दैट वाज जस्ट बिजी वर्क, आई थिंक हाँ वो एलिमिनेट हो जाएगा. आई थिंक वी माइट इवन बी एबल टू मूव टुवर्ड्स अ वर्क लाइफ बैलेंस, right? But that's another way to look at it. If you're freeing up your time and something is helping you, maybe you use that time for something else, self-care, read a book, you know, have fun with family. So हर चीज़ की positives भी होती हैं. But ये तो ज़रूर है कि I don't think mediocrity will be able to sustain itself. You talked about mediocrity and I want to focus on your own industry. You've got generally Pakistan में जो, और पाकिस्तान में नहीं actually, the biggest sort of headcount companies within the region have been the BPO, the lower value comparatively. और मुझे पर्सनली ये लगता है वो तो completely devastate हो जाएगा. That's just gonna be automated and that's over. पाकिस्तान में आपको बहुत सारी इस तरह की बुटीक एजेंसीज और सॉफ्टवेयर हाउसेज मिलते थे जो कि थोड़ा स्पेशलाइज्ड काम कर रहे होते थे. अगर मैं लाहौर में भी देखूं तो आई थिंक टू टेक्सटाइल, आई एम नॉट श्योर दैट दे आर स्केलिंग फेयरली फास्ट एंड आई वाज अनेबल टू उनकी कन्वर्सेशन में. सो इस पार्कव्यूज वाली वो जो कॉन्फ्रेंस है, यू नो, देर ऑल्सो लाइक वेरी फोकस्ड क्वालिटी टैलेंट. RBSoft डज द सेम. दे डोंट जस्ट स्केल रैंडमली. वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं अपने टैलेंट के. वो रियली करियर प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना रहे हैं. उस कॉन्टेक्स्ट में इफ़ आई वर टू आस्क यू टू गिव मी अ व्यू पॉइंट ऑफ व्हाट यू सी 10 years फ्रॉम नाउ इन टर्म्स ऑफ IT सर्विसेज और टेक सर्विसेज, मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन ये है कि 10 years from now, I don't see majority of the people coding. I feel like कि वो layer ही locked होगी.
वो डिस्कशन भी नहीं होगी कि कोडिंग कोई चीज़ होती है. एक नीश होगी वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड जो कि एक्चुअली जाएंगे और जाके उसके अंदर घुसेंगे. I see it to be completely conversational. So just a person sitting there and deciding जो product managers का role होता था ना, the tech teams are irrelevant. The project manager was just talking to the tech team is just now interfacing with an AI and it's talking about okay, so I need an app. Let's say mobile app नहीं, उस ज़माने में glasses आ चुके हैं. I need a glasses app जिसके अंदर ये हो, इसमें डेटाबेस में ये हो, ये मुझे चीज़ें चाहिए, और वो पुड़ंग करके जी आपको वो बना के दे देगा. एंड देन यू गाइड इट कि अच्छा नहीं इसमें ये चीज़ कम करो, ये चीज़ ज़्यादा करो, इसकी ये इस तरह से बढ़ाओ, और वो उस इंटरफेसिंग में रियल टाइम के ऊपर आपका जो है वो क्रिएट हो रहा होगा. दैट्स द विजन ऑफ द फ्यूचर दैट आई सी इन टर्म्स ऑफ वो. एंड उसके लिए हमारा आज का बंदा जो है वो तो बैठा सिर्फ पाइथन सीख रहा है. वो तो कह रहा है मुझे तो लाइब्रेरीज़ को ऐसे ही अब कमाल यूज़ करना आता है और इसको यूँ यूज़ करना आता है, और मैं तो जी ऐसी सिंटैक्स एरर्स 2 मिनट में निकालता हूँ जो कि सारा इरेलेवेंट. दीज आर ग्रेट पार्टी ट्रिक्स, दे डोंट मीन एनीथिंग टू एनीवन एनीमोर. हाउ डू यू सी 10 years from now, अगर आप मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूँ कि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, it's exciting, it's scary, it's everything happening all at once, but how do you, if you from the industry can sort of cut the noise and extrapolate what's going on, how do you see it 10 years from now? So a lot of people say that this is the age of AI. I think it's the age of ideas. I think idea people are the people who will rise to the top. And ideas भी वो जिस तरह हमारी पहले बात हुई है, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो किसी पेन पॉइंट को सॉल्व करें. सो अगर आपको आइडिया जनरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती, आई वुड से दोज आर 2 skills जो आप सीखें. बिकॉज अगले 10 साल में इफ़ आई सी एनी बॉडी प्रॉस्परिंग, इट्स द पर्सन विद द मोस्ट आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़, द पर्सन सॉल्विंग द मोस्ट प्रॉब्लम्स. बिकॉज देखिए इंसानों की प्रॉब्लम्स कभी नहीं ख़त्म होंगी, कभी कुछ होंगी, कभी कुछ होंगी, कभी कुछ होंगी. सो एनी बॉडी हु सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन अ गुड वे एंड हैज़ पेज अटेंशन टू डिटेल एंड टेल्स द स्टोरी वेल. बिकॉज एक मार्केटिंग का भी एंगल है. यू हैव टू गेट टू द पीपल जिनके लिए आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करें. तो एक्चुअली इट्स रियली फ़नी बिकॉज हमारी जितनी ज़्यादातर जो हिस्ट्री होती है वो यही कहानियों से, और काफ़ी जो एज चिल्ड्रन हम लेसन्स भी सीखते हैं वो कहानियों से ही आते हैं कि भाई ये सीख लो, ये सीख लो. तो आई फील लाइक आइडियाज़ एंड स्टोरी टेलिंग विल बी द फ्यूचर इन कंजंक्शन विद प्रॉब्लम सॉल्विंग. किस तरह हो रहा है वो मशीन्स प्रॉबली करेंगी. मतलब the actual nuts and bolts of it, right? The human thought is supreme then, yes, basically. Yes, creativity, human thought, stories. Right. You talk about problem solving, idea generation, critical thinking. Essentially, these are soft skills. A lot of people say you need to do that. When I really look back and I try to identify कि यार मैंने अपनी life में ये चीज़ें कहाँ से सीखी, it's fairly difficult for me to pinpoint. And so you said, people should go and learn that. How would you say, what do you think would allow for an average 21-year-old to be able to brush up these skills? Again, one can talk about government needs to create a better education system. No, but let's talk about things that everybody can do right now, right? Yeah. Practical बातें. Absolutely. I think put yourself in different situations. मैंने आजकल की यूथ में एक जो चीज़ देखी है ना, वो ये है कि through tech and a lot of it through this social media thing, people want overnight success. उनको लगता है कि भाई हम इतनी वीडियोस बनाएंगे और वो हमारी बस चल जाएंगी और बस जी that's it. They need to realize that hard work is very important. They need to realize that putting themselves in actual work situations. मैं आपको बता नहीं सकती. I take some of the internship interviews myself. I don't take the regular interviews myself, but I really like meeting the young people and they don't show up. Like they will say कि हाँ हमने internship करनी है, हम Monday को 9 बजे सुबह आ रहे हैं. अच्छा, internship accept होने के बाद नहीं show up? जी. ना interview के लिए they don't show up. अच्छा. They don't show up. The thing is that if you don't have that experience, because आप college से बाहर निकले ना, university से बाहर निकले, and go anywhere. मैं ये नहीं कह रही कि आपको बड़ा कोई aligned अपना देखें, because sometimes ये soft skills you pick up when you are not aligned with what you are learning in school, right?
तो आप कोई भी इंटर्नशिप कर लें अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड पुट योर सेल्फ इन अ वर्क एनवायरनमेंट एंड पुट योर सेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशंस बिकॉज यू विल लर्न समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी सिचुएशन. I think that is the only way, hands-on experience, on how you can gain these soft skills. But इसके ऊपर ज़्यादा हमारा जोर होता नहीं है इतना ज़्यादा, right? It's all grades. बस अच्छा grades हो गए, बाकी ठीक है. ज़िंदगी में जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी डिग्री pretty much, मतलब उसके बाद पेरी नौकरी के बाद कौन पूछता है आपसे कि आपका क्या CGPA था या बड़े आपने मार के मारे. Nobody cares. They want to know your story. They want to know अच्छा आपने क्या क्या किया. Right? How diverse were you in your role? Like, are you बिल्कुल by the book? क्योंकि by the book वाले 1000 और बच्चे बैठे हुए हैं. How कितना फ्लेवर है आपके अंदर? वो वाली चीज़ें आती हैं. मुझे बताएं, do you think failure is a great way to learn these things? Yes. I feel like we're a very failure averse nation. Oh my God, if you don't fail तो फिर तो you don't learn how to live. Without failure you don't learn how to live because कभी ना कभी you will fail. And I have seen so many people who are not used to failing, fail and break. ये तो बात ना हुई. You have to learn to fail. You have to know how to fail. And what you learn from failure is something that you will never learn from success. Because एक आपके पास comparison भी होता है ना. Someone who's just always been succeeding, they won't even have the amount of happiness that they would have had they failed first. Not to mention all the other experiences and things that they will learn. So yes, I mean, failure को villainize नहीं करना चाहिए. मुझे लगता है the only thing that we as a society should focus on is trying. Just keep at it. Keep trying because nothing is easy. Nothing in life that is worth having is easy. And you will fail along the way. Yeah. Tell me about you said कि आपके तकरीबन 200 plus head count है. What's the ratio there? How many girls are there within the company? Yeah, not that many, which is very sad. What would be the percentage? I think about हमारी 10% लड़कियाँ होती हैं. अच्छा, why do you think that's happened? Life as a girl is tough in this society, and not a lot of people understand that. A lot of the girls that I have been able to retain over the years, कुछ 10 plus साल से मेरे साथ हैं, have been girls जिनकी बात सुनी गई है. So you see our society is built a certain way, right? लड़की पढ़ती है, लिखती है, फिर उसकी शादी होनी होती है. शादी होती है तो वही अपना घर छोड़ के जाती है. अच्छा, अब शादी होगी तो वह बच्चे पैदा करो. बच्चे भी औरत को ही पैदा करने पड़ते हैं, right? We all know that a lot goes along with that. A lot that has not been talked about, but a lot that affects the mental health of a woman, right? They need time and support during those big changes in their lives, right? Our industry is not set up to provide that sort of support. Also, we don't have enough women. आप C-suite तो छोड़ दें. Even one below the C-suite, जिधर ये जाके बातें हो सकती हैं without it being a कमज़ोरी. वो लड़की है रो पड़ी, you know, वो बहुत होता है. वो इसको तो कुछ ना कोई तो रोज लेगी, या you know, she can't do a full day's work today. But if someone is 8 months pregnant or 7 months pregnant or 6 months and they're having a hard pregnancy, yes, they won't be able to. So a lot of women, that is where they drop off, right? शादी, और शादी से अगर वो निकल भी आती हैं, if the husband is supportive, the in-laws are supportive, because the whole setup has to be supportive, right? It's not just the girl who decides कि मैंने काम करना है. फिर बच्चा, और फिर एक के बाद दूसरा बच्चा अगर हो जाए तो फिर क्या करें? In terms of the supply side, वहाँ पर भी I think if I remember my university, we were at 14-15% women only. तो automatically वहाँ पे वो हो जाती हैं, कम हो जाती हैं. अगर मैं STEM की बात करूँ, फिर उसके बाद उसमें से बहुत सारी straight up they got married and they had no intention of working. So जो actually workable आती हैं वो बहुत थोड़ी रह जाती हैं. और उसमें फिर ज़ाहिर है पूरी the entire industry then competes for that. But alternatively, what I saw was the ones who actually came in and graduated were far superior in quality. Yes. Because I think so I found two very interesting things there. First being they had the odds stacked up against them, and so they had to fight
So they're stronger. They're stronger, particularly girls in STEM. And the second thing that I realized was a lot of the boys couldn't really care less about what they were doing because they've been taught कि बेटा तूने तो ये पढ़ना है और फिर तेरी नौकरी लग जाएगी और पैसा कमाना है तूने. तो वो बड़े entitled से आते हैं. वो कहते हैं कि यार अच्छा मैंने ग्रेजुएट कर लिया है, मुझे अगर मैं बहुत मार का so they're very driven by कि भाई हम तो पैसे कमाने आप बताएं आप नौकरी कितने की देंगे. मैं इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हूँ. आप उससे पूछेंगे ना कि भाई तुम वैल्यू जनरेशन क्या कर सकते हो, लाइक यू आर अर्निंग फॉर ए वर्थ दैट यू आर गिविंग टू अस, व्हाट इज दैट गोइंग टू लुक लाइक, एंड दे माइट नॉट हैव एन आंसर फॉर दैट. फॉर अ लॉट ऑफ दीज गर्ल्स दे डोंट, for them money is not an object, right? They've been taught that way. And so if they're working, they're generally working for a passion that is beyond money. And I'm not saying, I mean everybody needs to earn money, it's a great thing to have, but they have other reasons. I'm a capitalist, but core उनका फ़र्क है. मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पैसा कमाना बहुत आसान काम है, to be very honest. If you're focused on the value chain, making money, then money sort of follows, right? अच्छा, तो एक तो ये एलिमेंट है. दूसरा एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान में you've got sort of 50% of your entire population is women. You got around 20% women working from the workforce. You bring that up to 40% and automatically 4 million बंदा जो है ना employable बंदा सालाना आता है पाकिस्तान में इस वक्त, जिसमें से 2.4 million, because 20% women का रेशो है, तो 2.4 million are actively looking for jobs. 1.6 are sitting at home not adding any productivity. अगर आप उसको बांग्लादेश स्टाइल 40% कर लें तो that's 4 लाख हार्ड वर्किंग, और उसमें बहुत सारी एजुकेटेड लड़कियाँ can create a lot of value. How do you think, और जब मैं IT की बात करता हूँ तो IT में तो एक सप्लाई साइड प्रॉब्लम है. So the IT industry should be focusing on these women right now. Do you think there are we need to solve that problem as well in a way that we can say it's a cop out to say this is what happens, this is society is at fault. Bangladesh had that problem, China had that problem, they created solutions for it. So for example, one solution could be having a daycare. Like I find it fascinating that IT services companies do not have a daycare. IT services already बहुत सारी और प्रॉब्लम सॉल्व करती है. कल्चर उनका खूबसूरत होता है. You go to a factory, ask a woman to work there, it's very difficult. Yeah, they can't. You bring them into. Actually, funnily enough, IT companies में भी खैर मसला होता है. मसले हो जाते हैं. Because everything is very male dominated. So a lot of the girls who like stick it out and don't want to leave is because they feel like they're represented at FiveRivers and they know that they can just go talk about anything. I mean with me, and they feel comfortable. तो उसका एक बहुत बड़ा होता है. But yes, I agree with you, and like I told you, the few people that we have been able to retain, women like who've been working with us for 10 plus years, it has been on a case to case basis, because इसके ऊपर फिर आप you can't just have an HR policy that is equal for men and women, because men and women are different. तो वो आपको थोड़ा सा लाना है बीच में. You need to give women support where they need support. Right. Because they have certain functions that they have to fulfill in society. Because आप ये भी तो नहीं ना कह सकते कि अब कोई लड़की शादी ना करे या कोई लड़की माँ ना बने. That's not going to happen, right? So just provide which support. Is why I'm saying, like daycares, like the kids could come to work and the girls can be, again, like Apple is doing it, Google is doing it. They did it for a purpose. So daycares, or we've had girls who relocated to different cities after they got married. ये भी मसला होता है. And in that city there are not any tech companies, so उधर आप फिर remote work दे दें. Right? If you've seen over time that a resource is doing well and they use their time well, so then you trust them and you say कि ठीक है आप जिधर भी हैं आप उधर से काम करें. So ये थोड़ी सी चीज़ें इधर flexibility आनी चाहिए, और I think आएगी. But I think most of all जो मसला होता है वो ये होता है कि ये policies बन जाती हैं but कोई बात सुनने वाला नहीं होता. We need more women represented in the higher levels of the tech sector. Because like you said, it's very hard to break into the boys club. Women don't feel comfortable working in a company where the entire C-suite or the decision-making people are all men. Because men have a different way of thinking, women have a different way of thinking. Yeah. तो अगर आप ये थोड़ा हम बढ़ा देंगे ना, just more women in the C-suite or one below the C-suite, I feel like ये problem काफ़ी हल हो जाएगी, because then those policies won't just be words on paper. You will actually have someone implementing them the right way. अच्छा, ये मैं जो बात करने लगा हूँ उसके ऊपर
लेफ्ट शायद मुझे आके मारे, बट माई इज़ नॉट मी सेइंग इट, मैं जनरली ऑनलाइन पढ़ता हूँ तो आपको ब्लॉग्स मिलेंगे बहुत सारे कि different genders have different strengths. Yes. Right? Men are inherently functional, women are emotional, and through that emotional they create creativity and they create a lot of वहाँ पर उनकी strengths हैं. Yeah. Artistry and creativity generally कहते हैं कि it's a feminine trait. अगर मैं अभी वाली conversation और पिछली conversation को mix करूँ, do you think a lot of the age of AI is disrupting a lot of men? Because it's functional in its nature, and there is and there is actually an incredible opportunity for women now, because अच्छा खासकर पाकिस्तान में ना, a lot of women what they've done is they've taken soft majors. So they've done literature, शादी करनी है whatever, literature पढ़ लो, और यू नो आर्ट्स पढ़ लो, फाइन आर्ट्स. लिटरेचर से आप ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीख जाते हैं, राइट. सो हमने उनको इतने साल हमने उनको बेइज्जती किया कि यार तुमने लिटरेचर पढ़ लिया, ये तो इररिलेवेंट चीज़ थी, किताबें पढ़े बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजरती. बट अब मुझे आई फील लाइक कि उन लोगों की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मैसिवली ग्रो हो रही है. एंड देयर मे बी अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर सिटिंग एट होम, मे बी दे डोंट हैव दैट प्रॉब्लम ऑफ the in-laws not allowing her to work, or maybe her husband is incredibly supportive. But historically she didn't have enough opportunities. I think now in the age of AI, a lot of these women can come back to work, learn a few tools, very easy to learn now, and utilize a lot of their creativity and a lot of their artistry. And in a lot of ways, I found women to be better problem solvers than men. Like they're problem solving on a daily basis. कि यार बच्चे का ये और उसका वो और उसका वो. So उनको multitasking and problem solving all the time. How do you feel about that? Because I think that's going to, I see a very great opportunity for women to enter the workforce now in a digital environment. It can solve a lot of cultural जो हमारे sort of problems थे, walls थी, वो भी break हो जाती हैं. जो उनकी strengths थी उसके ऊपर भी play हो रहा है. So they could be a very useful asset in the future. What do you think about that? I definitely agree with you. And I think Pakistan, or any country for that matter, if you half your workforce is sitting at home, तो फिर आप तरक्की कैसे करेंगे? आप नहीं कर सकते. मैं एक दो चीज़ें from your past conversations, एक आधी आपको कहानी भी सुनाना चाहती हूँ. And then I also think कि अगर औरतों को मिल रही है तो आदमियों को भी कुछ सीखना चाहिए, right, from that. So मैंने एक अपना मास्टर्स जो किया मैथमेटिक्स में, पहला वाला, वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में किया. I was the only girl there जो कि A levels करके गई थी. बाकी सब FSC और मैट्रिक करके गए थे. खैर, that did not win me any friends there, especially among the professors. Right. मैं literally I was treated like in a juba कि ये पता नहीं किधर से आई है. उस क्लास में there were 80 girls and there were 12 boys. Right. Interesting. Yeah, on the merit system. And on the first day of class, one of the professors said, आ जाती हैं आप लड़कियां मेरिट्स की सीट पे, लड़कों को आप आने नहीं देती, और फिर आपने कर लेनी है शादी, तो ये तो गवर्नमेंट के सारे पैसे हैं, तो ये तो आपने ज़ाया कर दी. नहीं, मेरिट की सीट पे आती हैं तो मेरिट पे आती हैं ना. नहीं, बट गवर्नमेंट के पैसे ज़ाया कर दी ना, बिकॉज आपने तो शादी करके घर बैठ जाना, तो यू वोंट बी एडिंग टू द वर्क फोर्स. तो दैट वाज आवर वेलकम. Right. कि well done girls. तो वो जो आप बात कर, for being smart. So even in STEM, हमारे यहाँ मेरिट पे जो लड़कियाँ हुआ passionate about what they do. मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि रोल नंबर 1 से लेके, which is the way that they see कि कौन पहले, कौन दूसरा, कौन तीसरा आया था, रोल नंबर 1 से मेरा ख्याल है about 30 तक सिर्फ लड़कियाँ थीं. उसके बाद कोई लड़का बेचारा इक्का दुक्का आया था बीच में. So वो जो आप एक बात कह रहे हैं ना पैशन की, कि लड़कियाँ बिकॉज दे डोंट हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द मनी, दे कम विद समथिंग डिफरेंट. आई थिंक वो हमें सबको सिखाना चाहिए. जब आपको ये नहीं पता हु यू आर एट योर कोर, or what excites you or motivates you or what you are passionate about, if your career is not in line with that, na, you will never be a quality anything. Right? चाहे आपको घर बनाने का शौक है, चाहे आपको पेंटिंग करने का शौक है, चाहे आपको मैथ्स का शौक है, चाहे आपको लिटरेचर का शौक है, जिस चीज़ का आपको शौक है और आप में पैशन है ना, उससे आप इन द एज ऑफ AI पैसे आप बना लेंगे. सो दैट्स अनदर थिंग दैट द एज ऑफ AI इज डूइंग, राइट? It's taking away the कि oh you must be a computer scientist to do anything. No,
You have to be passionate to make money. Passionate about your idea, passionate about the problem that you are solving, passionate about telling your story. Because like you said, पैसा तो बनाना आसान है, लेकिन ये जो पैशन है ना, ये जो फायर है, ये मिसिंग है हमारे लोगों में. और जब तक ये नहीं ना आएगी, ये मुल्क नहीं बदलेगा. Why do you think that's missing? I think because हमें कभी ये बताया ही नहीं क्या कि who have you ever asked yourself? I mean, I do this a lot now. Who am I? हम कभी इंट्रोस्पेक्टिव कोई बात करते ही नहीं है. भाई, who are you? Other than your job description or the company that you work for, the degrees that you, who are you? What makes you happy? What excites you? Do you like birthdays? Do you like balloons? Do you like a certain author? Do you like to bake? Do you like to garden? Do you like to travel? Do you like photography? एक वो concept नहीं है of getting to know yourself. There are so many people I know, they have no hobbies. Hobbies तो पाकिस्तान में मजाक ही नहीं है ना. मतलब what do you do? Yeah. बस हम जी पढ़ते हैं. अच्छा, पढ़ के फिर क्या करते हो? फिर जी कोई ड्रामा देख लेते हैं. मतलब what does that mean? Yeah. Like growing up, and I mean, I salute my father for this. From baking to cross stitch to woodwork to making lamps out of shampoo bottles. I've done it all because it was fun to do. And you pick up so many skills along the way. तो वो जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स वाली एक बात हुई थी ना, वो हॉबीज से भी आती है. Because it adds another dimension to you. I remember I got really interested in fish. आपके पीछे भी एक टैंक है, बाहर भी टैंक है. And I would spend almost an hour every day tending to my fish. पाकिस्तान में generally pets are not a understanding नहीं है. Fish तो more so. टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, कुछ और करें ना. लोगों ने आके बोला, मैं कहा अच्छा तो आप इससे पैसे कमाएंगे, आप कोई यूट्यूब चैनल बनाएंगे. मैं कहा यार ये मेरे लिए है, लाइक मैं नहीं करूँगा. एंड दे, you know, their expressions were fascinating. They were just looking at me like ये पागल है, ये क्या मतलब, ये बस अपने लिए कर रहा है. And you're right, that for me that was meditation. That was catharsis. That taught me so much about patience, about life, about, because there's an entire ecosystem that's being built. And this is just one example, right? Like gardening teaches you so much. Cooking teaches you so much. Pakistan में unfortunately we're just like constantly thinking about कि अच्छा यार पैसा किस तरह कमाना है, बड़ी गाड़ी किस तरह. जब आप इनवर्ट नहीं होते ना, फिर आप आउटवर्ड फालतू की चीज़ों पर टाइम ज़ाया करते हैं कि मेरा नया कपड़े में कौन से अच्छे ब्रांडेड ले लूँ, मैं गाड़ी कौन सी लूँ, मेरा ड्राइंग रूम कितना अच्छा है. आपको सुकून फिर अंदर से तो आ नहीं ना रहा. मतलब you don't know who you are or what makes you tick or what makes you happy. So instead of, you know, going to buy a book from your favorite author, you are going to go and buy maybe the latest lawn का जो भी जोड़ा आया हुआ. Right? And because you need that push, you just need that feeling of a high, or you know. So we are finding it in the wrong things. We are finding it in the wrong things. We are finding it in चलो बाहर जाके खाना खाते हैं. I mean, it is ridiculous. Apparently we are in a recession. But आप किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, कराची में गई नहीं हूँ, I'm sure कराची का भी यही हाल है. It's filled to the brim. I mean, there's a waiting line. Why are people spending all their money on just eating out? और book store आपका पूरा एक होगा शहर में. मेरे पीछे तो एक दोस्त से बात हो रही थी. And even in Dubai, you know, I moved very recently, so just a couple of months there. If I were to meet someone, you know, I would go laser tag. वो जो एक रूम होता है जिसमें आपने escape room. You'd find an activity. Escape rooms are, by the way, great for problem solving. Absolutely. पूरी कॉम को escape room में डाल दें. 6 महीने का जो हमारा कोर्स है ना, वो escape room after escape room होना चाहिए. 100%. So you find an activity, you do a picnic, you do a this or a that, and it's fun. In Pakistan, अच्छा मैं बड़ा I was feeling great, and then in Pakistan I realized यहाँ पर मेरा क्या होता है, मैं दोस्तों को मैसेज करता हूँ, अच्छा यार क्या सीन है, फ्री है, वो कहते हैं हाँ जी फ्री हूँ, अच्छा चलो यार कॉफ़ी पे चलते हैं. अच्छा जी कॉफ़ी पे चले गए तो आप कर तो कुछ नहीं थे, राइट. सो नाउ यू गोना सिट एंड टॉक. अब वो टॉक क्या है, पहले एक दफ़ा आपने पूछा यार और क्या चल रहा है लाइफ में, ये हुआ है. अब 3 दिन बाद आप फिर मिल रहे हो उस दोस्त से, फिर आप वही पूछ रहे हो. अब आप फिर वही पूछ रहे हो, या फिर आप कह रहे हो यार तुमने उसको देखा, यार बड़ा अजीब है, यार वो देखा तुमने उसकी तो शादी में ये हो रहा है, यार तुमने देखा. सो यू गोना डिस्कस पीपल, राइट, लाइक स्मॉल माइंड्स डिस्कसिंग पीपल. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट busying yourself with something different. Like आप बीच पे चले जाते हो, आप हाइक पे चले जाते हो, आप
कोई हॉबी कर लेते हो. बच्चों का अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट सीम्स लाइक इस मुल्क में बच्चे होते ही नहीं है, बिकॉज इवन दो इसी में बच्चे होते हैं. हाँ. बच्चे ही होते हैं, ना कोई उनकी एक्टिविटी है, ना कोई उनका स्ट्रोलर फ्रेंडलीनेस है, ना कुछ और है. सो हॉबीज तो आई 10 out of 10 agree that we need to have, and dramas are not a hobby. No, they're not a hobby. Listening to music is great, everybody does it, but listening to music is not a hobby. Because it's passive, na? Yeah. You're not doing anything. You are not engaging with anything. You are just consuming content. Yeah. Right? Instead of creating something, you are just consuming and consuming. Yeah. So yeah, I think ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और लेकिन हम इनको नहीं दे रहे. We are not giving them the importance it deserves. The importance that they deserve. Yes, yes. थोड़ा सा मैं कॉन्वर्सेशन को फ्लिप करूँगा. अगर आप अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं, do you have long term clients, or do you look for, are you like, so how do you acquire your clients? Is this more of an Upwork thing, or a conference thing, or a relationship thing? So we have some Upwork clients, but very, very few. I would say 80% of our business is relationship based. Where we have good relationships with our clients that go on over years. So मतलब 10 साल, 12 साल, 6 साल. And again, like I told you before, that comes over with a lot of trust. They trust us, we trust them. They can come visit us. They know कि अगर उनके payroll पे उस्मान और ज़ैनब और हसन है तो वो ही हैं, और वो ये रहे उस्मान. एंड बिकॉज वी हैड पीपल आस्क, बिकॉज ये भी एक मसला है इन द इंडस्ट्री. पीपल से समथिंग एंड देन आई मीन आई हैड clients ask me on a call कि ये जो this Usman that you've given us, it is Usman, right? Yeah. I'm like, who else would it be? Yeah. They're like, but you don't know, people say that it's one person, but मैंने कहा, no, but that's not what we do. आप आके मिल लें. And we've had clients come and visit and create it, because you have to create a rapport and a relationship. Outsourcing का जो सबसे बड़ा मसला वो यही है ना कि there is no relationship. Disconnect बहुत ज़्यादा है. बहुत बड़ा disconnect है. So whether it's our devs teaching them Urdu and having like Mirchi के contest. We had a US client visit us recently. Turns out he was a Mirchi champion himself. Really? Yeah. उसने तो इधर मार दिया लोगों को. कहते ये तो कुछ भी नहीं. This is nothing. This is because वो Mexican chilies खाता है वो. Right. तो so you need that. Because then they are vested. Right. Then they are working with people. Yeah. And वो जो people to people connection है वो बहुत ज़रूरी है. Because उससे एक trust भी है. And then they feel कि हाँ भाई truly they are what they say. They are an extension of our team. They've got our best interest at heart. And I think उससे then you build a sustainable business. वो ownership है ना दोनों sides पे. Ownership है, relationship है, sustainability है. Because then over time they are also pushing कि भाई इन लोगों को अब grow कराओ. Right. Because that's another one of our very major focus areas, that our people must grow. Because जब तक you're not growing, you're not happy. आप एक ही चीज़ रोज़ा के करी जा रहे हो, there should be some learning, some growth. Right? पैसा is one part of your नौकरी. But every day you come into work, there should be other things. You should be learning, you should be passionate about what you do. So we try and fit people in the right places. Like if we know someone's really passionate about games, तो वो कोशिश करेंगे कि यार वो गेम टाइप काम में जाए. उसको हम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पे ना लगा दें जस्ट बिकॉज उसकी स्किल्स हैं. बिकॉज एक खुशी बहुत ज़रूरी है. आई फील लाइक काम पे जब तक आप खुश नहीं हो तो फिर आप यू आर नॉट प्रोडक्टिव इनफ. एंड ऑल्सो देन यू रियली ब्रिंग द इन्वायरमेंट डाउन, जस्ट ऑल ऑफ इट डाउन. राइट. सो दिस इज़ नॉट अ वेरी फास्ट स्केलिंग मॉडल, दिस रिलेशनशिप बेस्ड business, but I find it very satisfying. Much more sustainable, I would say. Sustainable, yes. I mean, we've been there for 20 years and there have been really no ups and downs. We've been pretty steady and now we're on a growing trajectory, but I find it more satisfying also. Majority of your clients are based out of North America? Yes. How do you see that evolving? Again, मुझे शौक है तो मैं अपना दरमियान में थ्रो करता ही हूँ. But my view of that is you got America sort of itching towards recession. You've got China ready to overtake America as the world's biggest economy. Middle East, actually I see three major regions in Asia. I see Africa as becoming the new Asia as was in the 20th century. And Asia के अंदर जो Middle East and North Africa region है, that's a $5 trillion economy.
very high GDP, $5 trillion economy. South Asia, when you combine all of it, is also a $5 trillion economy. Comparatively low GDP per capita because of a large population, but definitely a huge consumer market and a requirement there as well. And then you go towards ASEAN and they have a $5 trillion economy. So as regions, बड़ी ना एक वो है compatibility है, एक coherence है, and then so negotiation उस हिसाब से वो हो सकती है. For a lot of people, when I talk to people in the IT services sector, I feel like one of the mistakes that they make, and one of the things that Indians saw back in the day, was they had the foresight to identify where the world is going. And so I'll talk to a lot of people from the IT services sector, and they're like, oh, I don't want to go to Middle East. मैं बड़ा comfortable in North America में, because the Middle East is comparatively lower sort of, ARPU अगर आप कह लेंगे, यार वहाँ पे मैं 4,000-5,000 का बेच देता हूँ, यहाँ पे मुझे 3,000-4,000 में बेचना पड़ रहा है, मैं इन मार्जिन्स में क्यों खेलूँ? I get too uncomfortable. Because you're creating jobs in your home country. आपका मार्जिन थोड़ा कम हो भी जाए, you are facilitating. कर तो रहे हैं ना, exactly. फिर दूसरा वो ये कि one thing or the other. So वो एक बड़ा cop out है. I read a report on Saudi and वहाँ पर उन्होंने लिखा था कि IT services में top 2 players are South Korea and India, and my mind was blown के where is Pakistan, right? And I'm not saying we can compete with India, but at least we can take a piece of the pie, right? Like and there's incredible amounts of money being spent there right now. So how do you see that aspect, the focus? Because वो अब आज भी पूरी जो एवरेज छोटा लड़का जो एजेंसी बना रहा है, अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, वो भी बैठ कर जी नॉर्थ अमेरिका, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट मार्केट. अच्छा, वो आज तो खेल लेगा, पर आज से 5 साल बाद को समझना बड़ा ज़रूरी है. बिकॉज आज जो आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे, जो आप फोकस बिल्ड करेंगे, वो आपको 5 साल बाद स्केल देगा जब वो मार्केट्स मैच्योर होंगे. आई एम नॉट सेइंग मिडिल ईस्ट इज़ द मोस्ट मैच्योर मार्केट, बट everyone, in my opinion, needs to have the North America thing, but really needs to start sort of toying with the Middle East market and begin to understand how it works. What are your thoughts on that? So earlier this year, we set up a tech company in the UAE, and uska goal yahi hai to expand in the region, Saudi Arabia being one. We went to Saudi Arabia also this year and are looking. Did you go on Leap? Yes, I was there. How was that? How was Leap? It was chaotic. That's a first. Everyone I talked to, they were like very excited and but after Leap they were excited. Yeah, why chaotic? Because it was chaotic. I had meetings, I couldn't find the people couldn't find me. It was really? Yes. Well, they're not telling you the truth, because everyone that I spoke to after Leap was like, oh my god, it was so chaotic. Interesting. Yeah. Interesting. Yeah. No. It was. I think it's wonderful. So they brought everyone together, but yes, they just. I think वो teething issue है उनका. बिल्कुल है, and also I think they had a lot of people. Yeah. They had a lot of very interesting conversations. But I do believe that the organization should have been a bit better, because काफी लोग उधर networking के लिए आए हुए थे. Of course. Well, I mean conference. Conference पे यही आप करते हैं mostly. कोई जगह नहीं थी network करने की as such. बहुत ज़्यादा लोग थे. Lounges वगैरह का कोई सीन नहीं था. वो बंद कर देते थे entry. After a while, because they had reached capacity, so you had to be in by say 11 a.m. वरना आप अंदर ही नहीं जा सकते. अच्छा. So जो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, which I'm sure that they will improve next year, but ये है कि it really shows you that Saudi Arabia is ready for the world. Yeah. A lot of the things that we associate with Saudi Arabia, for instance, औरतों का रियाद और जद्दा में भी बड़ा मुश्किल है. मक्का मदीना का तो बिल्कुल समझ में आता है, they are holy cities, but रियाद और जद्दा में भी काफ़ी मसले थे, वो मुझे इस बार नहीं बिल्कुल नज़र आए. अच्छा, they fixed that. Yes. You do not have to. I mean, there's no police law. Right. Let's put it like that. Right. And I saw a very beautiful exhibition on Islamic art actually and history. Which was so they're doing a lot of things for culture and all of it, which is very. It's such a. It's very surreal, right? Because it's a good thing, because it's so historically significant for us, that place, right? As Muslims, and now they are bringing these things to the forefront, where you can look at the history, you can look at the artifacts, you can see the whole story. And a lot of millennials like you and I, we've grown up in the war on terror wala time, where our culture was suppressed, and it sort of made you feel like, oh, we're either inferior, ya ye cool nahi hai. And Middle East rising really makes you happy. Yes, it does. Yes, it does. Okay, this scale at my culture being represented, this scale is incredible. Yes.
So that was very nice. But to come back to your question, yes, I think the Middle East is a market that is worth looking at. And more than that, I think it is something that everyone should support. I mean, we should definitely support, because if the Islamic world is coming together and going towards progress, Yeah. I mean, that's what we used to do, right? Like that was the dream. That was where we started. आप Yeah. algebra को देख लें, that was a Yeah, mathematician. आप लाहौर की अगर history देखें तो there was this family in the old city of Lahore that used to make the most accurate astrolabes Really? in the world. Wow. And काफ़ी जो आपको म्यूजियम्स वगैरह में नज़र आएंगे वो उनकी फैमिली के ही बनाए हुए हैं. So these are these like little brass computers that used to help you with directions and a few other functions as well. Interesting. So Islam has always been all about knowledge Yeah. and all about learning. And I feel like we need to own that and we need to bring it back. 100%. What's the company? So effectively sales office वगैरह दुबई से run होगा and then work यहाँ पर होगा? How does that work? So it'll be both things. अभी सेल्स रेप्स होंगे दुबई मिडल ईस्ट की, अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो काम इधर होगा. बट इवेंचुअली अ लॉट ऑफ आवर पार्टनर्स एक्चुअली इन द US माइट ऑल्सो रिक्वायर पीपल बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस राइट विद सऊदी अरेबिया एंड दुबई एटसेट्रा. सो इफ दे नीड टैलेंट ऑन द ग्राउंड देन लाइक आई सेड बिकॉज वी आर पार्टनर्स एंड नॉट जस्ट Right. unnamed service providers, then So it becomes जो है वो so they will Right. say कि तुम हमारी टीम से इधर से लोग भेज दो. that's more economical, that makes more sense. also region का एक context होता है, culture का context होता है, so that's it's an easier fit. so all sorts of things can come off this. Makes sense. How is the current economic situation impacting you guys and your business model? Funnily enough, it has not impacted us because like I said, we have relationship based work. We work with larger stable companies, so हमें impact नहीं आया. नहीं. और लोकल पाकिस्तानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उससे क्या इम्पैक्ट आया या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंज है? इम्पैक्ट ये है कि नेगेटिविटी होती है आई थिंक थोड़ी आपकी वर्कफोर्स में बिकॉज दे फील लाइक ऑब्वियसली उनके खर्चे बढ़े बट वी आर ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड दैट बिकॉज वी अर्न इन डॉलर्स वी आर एबल टू Reflect that in their compensation. So I mean in that situation I think we are better off than a lot of other industries. Opportunity की जहाँ तक आप बात करें, इस वक्त तो पाकिस्तान में कोई पैसे नहीं डाल रहा. सब लोग भाग रहे हैं. बट we are developing a real estate project in Murree where we're trying to show that preservation and profit can kind of go hand in hand. Instead of going to a piece of land and saying कि ये एक कनाल के ऊपर ना मैं 4 बनाऊंगी 5 मरले के ताकि बिल्कुल ही ज़मीन को चूज़ के हम ख़त्म कर दें, तो उसको थोड़ा ज़रा turn it on its head, show that you can build profitable, beautiful communities where you are also taking care of the environment. And because we have beautiful northern areas, we have beautiful mountains in Murree, but जब आप उसके ऊपर कोई अगली आर्किटेक्चर खड़ा कर देते हो ना तो तबाह हो जाता है, तो बर्बाद हो जाता है सारा. किस जगह पर बन रहा है आपका? हमारा कुल्टना के पास नियर द मरी फॉरेस्ट. So we've actually gotten a piece of land that is kind of surrounded by preserved land, so no one can build there. Right. I hope, fingers crossed. So udhar we're building. Again, the idea is to pump some money into the economy, create jobs, and also show hopefully larger developers that जब आप नॉर्थ जाएं, बिकॉज अब बहुत लोग जा रहे हैं, गिलगित जा रहे हैं, स्कर्दू जा रहे हैं, चित्राल जा रहे हैं, तो ज़रा प्लीज़ ख्याल से जाएं बिकॉज वो जगहें बहुत खूबसूरत हैं एंड वो एक अल्लाह की नेमत है. तो वी शुडंट लाइक everything else that we do, shouldn't be plundered. Right. Yeah, basically बना करके do you plan to sell them or do you plan to make a resort out of it? So we're planning to sell them. Right. And again, we're going to try and be a little selective in the selling because we want to create a sense of community. वो जो एक पुराने ज़माने का मरी नहीं आपने I'm sure सुना होगा अपने वालिदैन से कि हम जाते थे और इसको भी जानते थे और उसको भी जानते, मतलब we want educated, पढ़े लिखे, तमीज़दार families and just to create a sense of community. So let's see how that goes because we do have a few parties interested in investing in Pakistan, but they want to first see what the ROI is. Right. And I think right now Pakistan can use all the investment that we can get. Especially I think हमारा जो tourism और travel का sector है, it's pretty underutilized. We have beautiful, beautiful places to share with the world. Right. But again उनको सही तरीके से develop करना है. Makes sense. Coming back to the IT services side, how do you see startups
there are, चलें पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, ओवरऑल ग्लोबली हमने पिछले 10 साल गुजारे, हमारे जो एक एवरेज बच्चा निकल रहा था वो आर्टिकल पढ़ता था कि स्टार्टअप्स का सीन है, स्टार्टअप आती है उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन होती है, एवरीबडी गेट्स रिच. Not saying startups are going to stop coming in the world, they're always going to be there, but the model behind those startups is now beginning to change, where every startup with a funny name gets funded. Uberization of everything is going to get funded वाली चीज़ जो है वो थोड़ी सी स्विच हो रही है. अब वो कह रहे हैं कि revenue positivity is a must, people are much more conservative. Pump and dump आती हैं वो novelty वाली, वो आजकल AI का वो टाइम चल रहा है, तो everyone is getting funded as long as they have a .ai attached to them, but by and large I think we're in a different model, and people in Pakistan, particularly in the sector, IT services wala, they need to understand where that's going. So what's your experience been like, and how do you see overall, अगर मैं global IT या digital industry की बात करूँ तो उसकी evolution आप किस तरह देख रही हैं? I think startups, like you said, कभी ख़त्म तो नहीं होंगे, because new ideas are not going to stop, and for every new idea there is a new startup, right? And that's what we spoke about, that this is the age of ideas. Right. But one thing I will say, in the context of Pakistan, we have every new fresh college grad wanting to start up their own company. उसमें ये मसला हो जाता है कि we are not producing problem solvers in the universities, and अब ये जो बच्चे हैं, they don't even want like proper job experience or work experience at a company where they can learn some things that could go wrong in their startup. तो इस चीज़ को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है, that there are skills other than just being a good salesman and having a high GPA and a good idea. A business takes a lot. It takes perseverance. There are days when you will question why you did what you did. You will cry. You will be frustrated. You will run out of money. So instead of throwing yourself into this without any preparation, and just कि भाई मैं तो कॉलेज से निकला और मैं तो I'm going to have, because वो romanticize हो गई है ना एक चीज़. With the age, मतलब इतने ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हुए और फंड भी हो गए हैं, अब ये भी देखने की बात है कि जितने फंड हुए हैं उनमें से एग्जिट्स कितने की हुई हैं, रेवेन्यू पॉजिटिव कितने हैं, बिकॉज अदरवाइज तो इट्स जस्ट अ बबल ना, इट्स जस्ट अ स्टोरी दैट सोल्ड. सो अपनी स्किल्स को एक लेवल पे ले आएँ, किसी और बिजनेस में जाके ये देख लें कि पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं, राइट? वाई मेक द मिस्टेक्स दैट समवन एल्स हैज़ ऑलरेडी मेड, ताकि आपके चांसेस बेहतर हो जाएं, बिकॉज आगे आपके चांसेस बेहतर होने पड़ेंगे. नॉट एवरीबॉडी इज जस्ट थ्रोइंग मनी एवरीवेयर, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी है. और एक ये जो रोमांटिसाइज भी हुआ है ना, दिस इज़ नॉट अ वेरी बैड. आई हैव डन सेवरल स्टार्टअप्स. इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस एट ऑल. I have literally, I've cried. Like, मैं किधर फंस गई हूँ? What have I done with my life? Why did I do this? So it's not for everyone. There's a certain temperament that's required. No, it's not for everyone at all. And also, if you go into it with no experience whatsoever, तो वो फिर then it's a different story, right? So I do feel that our youth really needs to work on their skills, and not just कि मेरा A आया था और मेरा 4.2 आया था, but actual skills that you develop in the workplace. Right. मुझे एक बात बताएं, when I look at local startups, a lot of these have been, and I've been very public about this opinion as well, a lot of them have been targeted towards consumption of the local economy. And उसके ऊपर पूरा मेरा rationale है कि local economy is draining a lot of capital, and so if you build the graph of it, it actually doesn't show growth because the pie is so small, so you have to increase the pie first. And one of the ways obviously to do that is कि आप export के अंदर जाएं, और एक्सपोर्ट के अंदर जब आप जाते हैं तो इसमें हार्ड इंडस्ट्री है, सॉफ्ट इंडस्ट्री है. हार्ड इंडस्ट्री टेक्स टाइम, सॉफ्ट इंडस्ट्री मोर ऑफन देन नॉट इज फास्टर टू put together, and so IT services effectively is a high job creation, high white collar, middle class generating industry that exists. But obviously there's never just one solution to any problem, right? And so a certain percentage, the top tier percentage of quality talent and quality IT folks who've been around for 20 years like yourself, I feel like need to now go towards startups,
but for the global market, because they have the connectivity, they have the infrastructure or the capital as well. If they have to fly out, if they have to hire, let's say, quality resources in Sweden, in Dubai or Denmark or whatever, they have the ability to do that. So two questions. First, are you guys working on products targeted towards the international market in the services industry? What do some of those products look like? What's the vision there? And how are you going about it? And then second, I'll ask after as a follow-up to this. Okay, so we are definitely doing products. We used to do products in the past also जब ये iPhone का apps का बहुत boom आया था. And in fact, the photo editor that we made for the BlackBerry made it to world #1 on their app store. तो products का हमें हमेशा से शौक है. और अब वो जो शौक है, I think it is time to bring it to the world stage, because I think पाकिस्तान से products निकालना is something that is very scalable. You are no longer selling, $40 an hour or $30 an hour. You are selling a product, right? And you can sell it again and again and again. हम लोग कुछ productivity apps के ऊपर पहले focus करें. One that's already on the market is Smart Windows, which is a Windows workspace management application. Basically, the way you manage your multiple monitors and workspace, it is all saved in a profile that you can, just open up at any time. You can have a different profile for work, a different profile for play. If two people are using the same computer, they can each have their profile, etc. So हम उसे start हमने किया, but we have multiple products in the pipeline. Another thing, again, मुझे पंगे लेने का शौक है, थोड़े कभी कभी लेती रहती हूँ. So I myself, as a hobby, I create. I draw, I do paper crafting. And so for a long time, I've been selling my books on Amazon. And I just upload the PDF. Amazon does everything else. They do the printing, the distribution, all of it. So we've created a little collective, a publishing collective called Ink Tribe, where we are going to try कि Pakistani जो creators हैं, because we have a lot of talent. Talent की तो कोई कमी नहीं है, especially creative talent और औरतों में, like you said, कोई कमी नहीं है. So artists and people who've written fictional stories or self-help books and stuff like that, we're going to try to take them to the US market. Because again, this is something where you can create an income. Just sitting at home, आपके ऊपर और कोई आपने एक चीज़ बनाई है, and you're just basically sharing it with the world, right? Right. So that's one thing that we're working on that side, because I do believe that we need more opportunities for women in Pakistan, because again, बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा untapped resource है ये. And दूसरी तरफ, through FiveRivers, we are launching our own products also. How many, if I were to sort of segment your workforce, how many of them would be tech folks, computer science, software engineering? If you give me a percentage, for example, ज़ाहिर है उसमें, बल्कि in fact include the management in it as well. How many have a background of tech? And then how many have a background of anything else, just management or marketing or any of that? So between HR, अच्छा, HR function को cut कर दें. कट कर दूँ, बिल्कुल निकाल दूँ. अच्छा, so between the two, I think it would be about 70% tech, and then 30% support functions, in which I would put finance, right? And finance, admin, marketing. Okay, what does the marketing do? Marketing helps with lead generation. Business and sales and marketing, I should probably say. So a lot of lead gen, we're focusing on that. And then also this new product wing, marketing for the products. Right. Because that's a huge component. You create something wonderful, but then you need to sell it. And marketing में किस तरह के generally लोग हैं? Give me a persona. So different kinds of people. We have people who are good with content. So social media content, developing like tutorials, videos, how is the software used, creating all the content around that. And then obviously we have like SEO people. We have people who do the media buying, ad campaigns, and then we have them for separate. For instance, we have one who just works on Amazon. Right. And then we have people who are for Facebook and Instagram and Google and so stuff like that. Do you have students graduated from LUMS working in your company? Yes, we have a lot of Luminites, yeah. IT or otherwise? IT. I'm actually married to one who works with me. Yeah. Recently, I've spoken to a lot of folks in the startup space, and you'd find a lot of LUMS kids there.
Pakistanis are very polarized about LUMS. You Why? either love it or you hate it. Disconnect है ना बहुत ज़्यादा. You got एक बहुत specific it has the goods and the bads. The bads are it's too much of a bubble. You're very disconnected from the Pakistan that we know. The goods is that you are disconnected, so you're able to create something an different. intellectual and a very different space. I feel like the IT industry hasn't utilized that potential. The business in overall Pakistan का जो business ecosystem है वो तो करता है, right? So the PNGs and the Unilevers of the world will take the LUMS kids, the management kids and the but और startups ने भी लेना शुरू कर दिया. So the smartest and LUMS का आप जो भी उसको कह रहे हैं, they're curated as the smartest kids in Pakistan right now. IBA है, LUMS है. I've had my fair share of being in and around IT companies. और उसमें मैंने एक चीज़ ये देखी है कि one of the mistakes that they make is because they see that as tech, so they just focus on tech. अच्छा, मेरी systems के एक सीनियर लीडरशिप से बात हुई, पॉडकास्ट पे ही है, इट्स अवेलेबल, पीपल कैन चेक इट आउट. तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली. उन्होंने कहा यार पाकिस्तान में स्केल करने का एक मेजर वजह, लैक ऑफ स्केल का एक मेजर वजह ये थी कि इंडिया में बिजनेसमैन ने IT किया, हमारे यहाँ टेकी ने IT किया. तो हमारे यहाँ टेकी को तो 20-30 साल लग गए पहले सिर्फ और सिर्फ बिजनेस समझने में, सेल्स एंड मार्केटिंग समझने में. आपने स्टार्ट में बोला कि हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो मार्केटिंग है, राइट? और वो कहते हैं कि जी अब जाके हमारे पास वो टैलेंट बना है जो 50-50 साल के सीनियर लीडरशिप है, जो बाहर ऑरेकल से आई, IBM से आई, इधर से आई, उधर से आई, वो एक्सपोजर लेकर आई. अब वो जाके वो स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर रही है जिसमें स्केल बिल्ड पॉसिबल है इन द फर्स्ट प्लेस. बड़ी बात दुरुस्त थी, मेरा दिमाग खुला कि यार वाकई किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए टेकी का यार टेकी है, उसकी वीकनेस होगी सेल्स एंड मार्केटिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. इट वुड बी गुड अगर वो ये चीज़ें कर सकता है, लेकिन आपको अगर ये काम जेन्युइनली करवाना है तो यू नीड द बिजनेस मैनेजमेंट टैलेंट, यू नीड द लाइक मोर ऑफन देन नॉट हम क्या करते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हम लेकर आते हैं टेक का लड़का और हम कहते हैं यार तू टेक का है बट तुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए. नहीं, आइडियली तो आपको लम्स का बच्चा चाहिए यार, उसको सेगमेंटेशन आती है, उसको कंज्यूमर उसके हाथ पे है. फिर वो जाके टेक को बोले कि यार ये मेरा कंज्यूमर चाहता है, कैन यू मेक दिस फॉर मी और नॉट, राइट? सो दैट मैरिज आई फील लाइक इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू वेव ऑफ लाइक I'm talking to all these LUMS kids and they're telling me all about, they're passionate, they're trying to solve those problems, they're going in, forgive me if I mention it, but trucking startups हैं. आप कभी सुने उनका जिस इकोसिस्टम में वो काम कर रहे हैं, इट्स हिडियस. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू सॉल्व. आई होप देयर एबल टू डू दैट. देयर incredibly smart minds. But that's going to take the amount of effort that you're putting in and the money that you're putting in. The result is उसमें बहुत सारी और चीज़ें होनी है before that is possible. The same minds can come in and be working for products for the world. Unfortunately, we're not able to do that, right? So again, comment on that. इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, अगेन दैट होल स्टार्टअप थिंग, एवरीवन वांट्स टू डू देयर ओन थिंग. सो प्रॉब्ली LUMS के जो बच्चे हैं हु आर ब्राइट एंड हैव एन आइडिया, दे डोंट वांट टू गो वर्क विद अ कंपनी, राइट? दे विल वांट टू क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन कि भाई ये तो मैं अपना करूँगा. आई थिंक दैट एटीट्यूड ऑल्सो हैज़ टू चेंज बिकॉज I don't know why we feel so insecure. Maybe because it's because companies are also not fair. Instead of, like creating a bigger pie, doing something through collaboration that people have a share in. उसमें मसला ये ना, it's black and white. So the kid is compelled to say कि I'm going to do my own thing because companies are going to say कि listen, come do a job for me where you are working as a co-founder in a startup environment. Don't get anything out of it, right? हमारे यहाँ for example we don't have a shares का concept for most part in most companies. हम वो ownership built in ही नहीं कर रहे उस बंदे की. अच्छा, हम करते हैं. So for me I feel like कि a lot of companies what they do is they like कि अच्छा जी ये कंपनी है और इसके नीचे ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं. मेरे लिए द आइडियल सिचुएशन वुड बी, ये कंपनी है, इसके नीचे एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की वो बन रही है एंड देन समवन कम्स इन, तो आप उसके साथ उसको जो कॉम्पनसेशन में ऑफर करते हो कि यार तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट है 4 years 5 years 6 years में 2% 3% whatever. And when this product actually becomes something, it's going to get spun off and then it could work as a whatever, right? So वो वाले मॉडल्स में दरमियान का रास्ता कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि वो लोग भी ready So we do have मैंने आपको रियल एस्टेट डेवलपमेंट का तो बताया, बट वी ऑल्सो हैव अ वेंचर फंड विच इज़ FiveRivers Ventures and this is what we do through that. It's a spin-off, it's a separate company, but हमारा एक ये भी है कि you need to be realistic.
in what you want in return. एक ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है कि बाहर फॉर इंस्टेंस अगर कोई someone's putting up all of the money, taking the risk with you, the idea is yours, you get a certain percentage, right? Because obviously they also have to hedge their bets. So वो थोड़ी unrealistic हो जाता है कुछ सिनेरियोज़ में where people want too much कि आप पैसे भी डालें, आप ये भी करें, आप वो भी करें और हमें आधा दे दें. इस तरह नहीं होता. So I think वो थोड़ा सा जो है we need to figure out the economics of it, and जो वर्ल्ड स्टेज पे होता है उसको ही बंदा लेके आए, लाइक यू सेड ओवर टाइम वेस्ट होता है, राइट? बिकॉज फिर ये भी तो ना हो कि लेके कोई भाग जाए या आपके पैसे डूब जाए. हाँ, मतलब उसके आई मीन आई फील है कि उसके मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं क्या? करते हैं, बिल्कुल करते हैं. का आप ये पाकिस्तान में तो बड़ा सिंपल करते हैं जी, 50% आपका 50% मेरा जी कॉन्ट्रैक्ट में डाल दो. अब तो दुनिया में उसके इतने बहुत तरीके नहीं, बट आई थिंक ये डेफिनेटली हो सकता है. ये डेफिनेटली हो सकता है. आई थिंक दैट स्टार्टअप शुड वर्क इन कंजंक्शन विद कंपनीज बिकॉज अगेन लाइक आई सेड there's so much knowledge that you can take from all the people there, right? Yeah. They've tried certain things, failed at them, succeeded at them, what failed, what succeeded. That is the kind of mentorship that a young startup needs. Yeah. So I think उस environment में करना चाहिए. उसके like अलावा the smartest people in the room should not be focused on the Pakistani economy. Sure, some of them may. Fintech is a very important space. Yeah. That should happen right now. But a lot of ideas are coming in very sort of tier 4 टर्चरी एरियाज जो कि जिसके पीछे बहुत सारा काम होना बाकी है बिफोर वी कैन एक्चुअली गो देयर. एंड आई फील लाइक अ लॉट ऑफ दीज नीड टू फोकस ऑन ग्लोबल मार्केट्स. The people who do have the experience of global markets are IT services companies, and a lot of the focusing on that market is going to require IT ka kaam, right? Solutions, IT enabled products, solutions, absolutely. Yeah. So I think that's a marriage that's a वो होनी ही है eventually. प्रॉब्लम उसमें यही है कि आई हियर यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक जो मुझे फील है वो ये है कि यू आर स्टिल अ लिटिल मोर टिल्टेड टुवर्ड्स योर साइड बिकॉज आप भी डस चुकी हैं 4 दफ़ा. उनसे बात होती है तो वो भी डस चुके हैं 4 दफ़ा. एंड आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ मोर देयर नीड्स टू बी मोर फ्लेक्सिबिलिटी, देयर नीड्स टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड. And then follow that. And then follow that. And then when I say global standard, you can't follow the American standard. That's a different industry altogether. You have to look at India. You have to look at Indonesia. There will be a time. मुझे पता ना, आपने अगर 50-50 की बात बोली तो आप कह रही हैं कि यार वो एक बच्चा आ रहा है, वो आइडिया लेकर आ रहा है, वो कह रही है 50% मांग रहा है. वो बच्चा पता क्या कहेगा? वो कहेगा जी आप जाके अमेरिकन मार्केट्स में देखें 10% से कोई उठाता ज़्यादा नहीं लेता कोई प्री सीड के अंदर, राइट? जो इन्वेस्टर है. तो आप तो 50% से भी ज़्यादा मुझसे मांग रही हैं. आपकी तो सेट मेंटालिटी है. आप क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है इस वक्त इस मार्केट में ऑपरेट करने का, राइट? देयर विल बी अ टाइम जब वो 10% पे आएगा. माई पॉइंट इज अ लॉट ऑफ अस फील लाइक ऑन बोथ एंड्स दैट वी गोना डू वन थिंग एंड दैट इज गोना बी अ सक्सेसफुल थिंग. नेवर. एग्जैक्टली. आपका शायद उस बच्चे का पहला हो जिस पे वो 10% पे कर रहा हो, तो इन्वेस्टर इज 90%. शायद आपका एक हो जिसके अंदर जो है ना आप 10% पे कर रही हैं और वो 90% लेके आओ. द मार्केट इज गोइंग टू सेटल समवेयर. आई एम नॉट सेइंग इन्वेस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स. The fact is the beauty of applets is you know literally 1-2 लाख डॉलर के ऊपर आप चीज़ें निकाल के उसको घुमा सकते हैं. So I just feel like I wanted to put that thought out for the viewer as well कि we need to look at the startup space differently and the way that sort of works. हम अभी local consumption में नहीं कर सकते. We need to begin to aggressively look at the international market. We're at the 1 hour 20 minute space. मैं थोड़ा सा इसको अब wrap up करूँगा. I'm going to ask you one last question that I generally ask all of my guests. You're here. You did your master's from Texas A&M, so prestigious. UT Austin. UT Austin. Prestigious university. आप वापस आके you've invested in Pakistan, and my understanding is you choose to remain in Pakistan. Yes. And thankfully, a lot of your work is dollar pegged, so at least you're protected for now. How do you see, knowing what you know now, seeing everything that you've seen, Pakistan of 27 years from now in 2050, again, जिस तरह से आपकी अपनी एवोल्यूशन हुई है, जिस तरीके से आपने ग्रो किया है, आजकल का एक ज़ाहिर है कि एक एलिमेंट है कि जिसमें एक होपलेसनेस जनरली है, डिस्पॉन्डेंसी जनरली है. And a lot of guests, when they answer this question, they say, I hope, and then they say, if this happens. So I want you to take the hope out, and I want to take the ifs out, and I want you to, as a problem solver, as a mathematician, just sort of try to extrapolate. What are your thoughts on what it could look like? Could be horrible, could be same as today, could be great. What's your high probability feeling of what it's going to look like? I think it's going to be wonderful, inshallah.
बिकॉज हमारी पॉपुलेशन अगर आप देखें इट्स मोस्टली यंग, राइट, एंड यूथ में एक पॉजिटिव बात होती है कि दे आर फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, राइट, बिकॉज उनको भी शायद ज़िंदगी ने इतना हराया नहीं होता, मारा नहीं होता, तो हमारे पास वो ऑप्टिमिज्म बहुत है, हमारी पॉपुलेशन में है. वी आर ऑल्सो वेरी रिजिलियंट, वी've been through a lot and we've pulled through all of it. We also have a lot of resources. अभी मैंने आपसे टूरिज़म इंडस्ट्री की बात की है, आईटी सेक्टर की हम लोगों ने बात की है, रियल एस्टेट की हम बात करें, अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग की और एग्रीकल्चरल की तो बात ही नहीं की कि टेक एग्रीकल्चर के लिए क्या कर सकता है. देयर इज़ सो मच टू बी डन देयर. मतलब हम तो स्मार्ट फार्मिंग करते ही नहीं हैं, तो हम पर एकड़ यील्ड्स तो पता नहीं किधर लेके जा सकते हैं, जो कि हमें ले जाने की ज़रूरत भी होगी. आई थिंक हम बहुत अच्छी जगह होंगे. हम लोग नेगेटिव नहीं सोच सकते, सोच ही नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है. देयर आर टू मैनी पीपल्स लाइव्स. बिकॉज देखिए ना, आप टॉप कहीं के भी, फॉर इंस्टेंस टॉप लम्स के ग्रेजुएट्स, टॉप फास्ट के ग्रेजुएट्स, पीपल विद मनी, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट. बट आपकी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की ही है, वो पाकिस्तानी ही है और वो पाकिस्तान में ही रहेगी और अपने बच्चे भी इधर ही बड़े करेगी. तो द नंबर्स आर जस्ट, इन माई ओपिनियन, अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें, द नंबर्स आर टू बिग फॉर देयर नॉट टू बी समथिंग. Too big to fail, basically. Too big to fail, and also too many people with too many dreams and too much hope. Right. Mahe Zehra, thank you so much for coming in and sharing all that insight. I hope that you were able to grow even further. I'm happy to see a woman in the C-suite. I hope आप start मैंने ये चीज़ mention की थी. Is there anyone else in the I have not met tech anyone. sector? I haven't met anyone yet. Chale, I hope to see more of Inshallah. women coming in and being able to create a better and safer space. I think economics-wise, it's a no-brainer that we need to do this now. And I think now we're going to begin to see better, hopefully, better opportunities there as well. Thank you so much for coming in. Thank you so much for having me. It was a pleasure. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. और प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, what do you think about the age of AI, the revolution that's coming in and how things are gonna change. हमने early on उसके ऊपर बहुत सारी बात की. Do you think AI is going to lead to complete joblessness? Do you think new jobs will emerge? What are your thoughts? Let me know in the comment section below. इसी के साथ साथ यहाँ पर कहीं पर easy पैसा जायज़ कैश सादा प्यार होगा. If you'd like to support the channel, we accept anything from ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ overseas Pakistanis can also support us now. We have a Stripe link down below where you can help out and use your credit cards or debit cards and whatnot, and it works now. So वो भी हमने setup कर दिया है. But anyways, this was Sayyid Muzamil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.